जी अगले 5 वर्षों में 1 लाख नए संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को जोड़ना भारत के स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन के लिए एक माइलस्टोन है। चिकित्सा पर्यटन जैसी कल्पना भारत के सेवा सेक्टर में और उसको वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देगी। राज्यों में निजी क्षेत्रों में सहयोग से 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करना यह अभूतपूर्व उपलब्धि रहने वाली है। पर्यटन केंद्र, स्वास्थ्य जांच, पुनर्वास, ये सब नौकरियों को बढ़ाने के अवसर प्रदान करेंगे। पशु चिकित्सकों में पेशेवरों की संख्या 20,000 तक करने से भारत में और पशु चिकित्सक, प्राइवेट कॉलेज, वेटरनरी, पशु चिकित्सालय, जांच प्रयोगशाला, प्रजनन सुविधा स्थापित करना निश्चित रूप से किसानों के लिए लाभकारी होने वाला है। भारत के वित्त मंत्री ने 17 विशेष दवाओं को छूट देकर और देश में स्वास्थ्य के प्रति अपनी सजगता का परिचय तो दिया ही है, साथ ही आयुर्वेद में एम्स स्तर के 3 आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करना यह भारत के आयुर्वेदिक औषधि और आयुर्वेद के द्वारा उपचार के लिए माइलस्टोन होने वाला है। माननीय सभापति जी, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर पर सरकार की प्रतिबद्धता बताती है कि हम किस तरीके से सबको साथ लेकर चलने की भावना से काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने इस क्षेत्र को भी और आगे बढ़ाया है। 20 नए अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग चालू करना यह अपने आप से व्यापार और आवागमन में भारत को काफ़ी आसानी प्रदान करेंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाना ये भी माइलस्टोन है। माननीय सभापति जी, लोकल कारीगरों, स्टार्टअप्स विश्व भर में पहचान दिलाने के लिए निर्यात पर लगी 10 लाख की सीमा को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे मध्यम श्रेणी के व्यवसाय अब ई-कॉमर्स के माध्यम से दुनिया भर के बाजारों तक बिना किसी बाधा के पहुंच जाएंगे और बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाना अपने आप में एक बायो फार्मा शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक नई दृष्टि है जो चिकित्सा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माननीय सभापति जी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया ब्याज अब आयकर मुक्त होगा। इस पर कोई TDS नहीं लिया जाएगा। ये निश्चित रूप से आयकर में जिस तरीके से 12 लाख का छूट देकर और देश की जनता के सामने एक नया विजन रखा था, जिस तरीके से करों में GST का छूट देकर एक नया विजन रखा था, ये भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। मगर मैं जानता हूं कि राहुल गांधी जी के माध्यम से विरोधी दल जिस तरीके से भ्रम फैलाते हैं, यह लोकतंत्र में नहीं होता है। उन्हें अपने भ्रम फैलाने की परिस्थितियों का स्वयं अध्ययन करना चाहिए। यह बजट कृषि अवसंरचना, भंडारण, कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन को मजबूत करके किसानों को केवल उपज बेचने वाला नहीं, उद्यमी किसान बनाने की दिशा में एक दृष्टि देता है। यह बजट नौकरी मांगने वाला युवा नहीं, नौकरी देने वाला युवा तैयार कर रहा है। यह बजट महिला शक्ति और सेल्फ हेल्प ग्रुपों के माध्यम से असली सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं को सहानुभूति व समाप्त महिलाओं को सहानुभूति नहीं, सामर्थ्य चाहिए। माननीय सभापति जी, MSME और उद्योग असली रोजगार की रीढ़ है। छोटे उद्योगों का बड़ा बना रही है ये सरकार। यह बजट अमीरों का नहीं, मेहनत करने वालों का बजट है। यह बजट राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए बना है। और माननीय सभापति जी, यह बजट एक संतुलित और विकसित भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसमें कार्बन कैप्चर CCUS प्रौद्योगिकी के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है। यह ग्राम स्वराज जैसी पहल महात्मा गांधी के खादी और हथकरघे के सपने को आधुनिक वैश्विक ब्रांडिंग के साथ जोड़ता है। वर्ष 2026 का बजट समाज के हर वर्ग को संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करा सके, ऐसा बजट है। और मैं इस बजट को एक क्रांतिकारी कदम मानते हुए खासकर किसान भाइयों के लिए इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं, इसका समर्थन करता हूं और इस बजट को पारित किया जाए और विकसित भारत की यात्रा इसके माध्यम से तेज हो रही है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री इंदिरा हंग दुबे सुबे, कितने मिनट हुए? धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने बजट 2026-27 के इस डिस्कशन में बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं सिक्किम की जनता की ओर से और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के ओर से वित्त मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। यह बजट भारत के डाइवर्सिटी को, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो
नॉर्दर्न इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सबको समावेश करके हर क्षेत्र में एलोकेशंस का प्रावधान किया गया है। हर वर्ग और सेक्टर्स को समावेश करने का प्रयास किया गया है। भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए हर सेक्टर सशक्त बनना आवश्यक है, जो इस बजट के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को हम धन्यवाद देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को इंक्लूड करके बुद्धिस्ट सर्किट बनाने का जो प्रपोजल लेकर आए हैं। सभापति महोदय, हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से सिक्किम जो ऑलरेडी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रहा है, it's fine. Madam, I think so we will take note. It's fine. Kindly you I'll take just your continue. seat. Kindly you take your seat. Brother, you can't do. No, how you can? No, if chair has allowed. No, please. सभापति महोदय, Nothing will go on the card except you. सभापति महोदय, Nothing will go. No. ठीक है, कन्वे कर देंगे। सभापति महोदय, I have taken your note. ठीक है, I have taken your note. यहाँ से नहीं कंट्रोल होता है, हमने कहलवा दिया। सभापति महोदय, आई रिक्वेस्ट यू कि ये जो टाइम मुझे एलोकेट किया गया है सर, इसमें आप बोलिए सर। सबसे पहले सर ISM 2.0 का जो एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है सर, हम बहुत आप बोलिए प्लीज, आप ही की स्पीच जा रही है। काइंडली यू डिलीवर योर स्पीच। करेक्ट कर दीजिए प्लीज, करेक्ट हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म। ओके सर, आई विल कंटिन्यू प्लीज। मेरा टाइम पूरा दे दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा टाइम ऑलरेडी कम एलोकेट किया जाता है हम लोग को, और इसमें भी डिस्टर्बेंस होगा तो और कम हो जाएगा। प्लीज मेरा पूरा टाइम एलोकेट कर दीजिएगा। सर, ISM में जो इंडस्ट्री लेड रिसर्च का बात किया गया है सर, वैसे भी हायर एजुकेशन में ऑलरेडी रिसर्च बहुत ही कम बजट है, जिस तरह से अच्छा रिसर्च नहीं किया जा सकता है। तो इसमें इंडस्ट्री लेड रिसर्च का जो प्रावधान लाया है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को आभार व्यक्त करता हूं कि एटलीस्ट रिसर्च करने का जो प्रावधान किया गया है, इस बजट प्रावधान को, इसमें हमेशा हमारा एक्सपीरियंस रहा है सभापति महोदय, जो भी बजट एलोकेशन होता है, ऐसे बड़े बड़े बजट एलोकेशन होता है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को ही दिया जाता है, जैसे IIT हो, IISc हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको नहीं देना चाहिए, लेकिन रीजनल इंस्टीट्यूशंस जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है, सिक्किम, अरुणाचल जैसा हिमालयी राज्यों में जो इंस्टीट्यूशंस बसे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे कोई भी राज्य का क्यों ना हो, इनको भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की तरह देखकर ही दे देना चाहिए सभापति महोदय। जिस तरह से प्रावधान किया गया है, हर रीजन में ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को बजट का प्रावधान करना चाहिए, और इंडस्ट्री लिंक्ड जो रिसर्च है हर इंस्टीट्यूशन में होने की ज़रूरत है। सभापति महोदय, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर का जो प्रावधान किया जा रहा है, इसमें मैं बताना चाहूँगा सभापति महोदय, जो भारत का हैंडलूम वर्कर्स है वो आज भी 60% नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही सबसे ज़्यादा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में काम किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी का जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस होता है, ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव होता है, और ये ज़्यादा प्रॉफिट का नहीं होता है। जिस तरह से मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल का जो प्रॉफिट मोटिव में किया जाता है, इस तरह का नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहीं भी नहीं होता सभापति महोदय। तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो फाइन क्वालिटी फाइबर्स बनाया जाता है और जो हैंडलूम से काम किया जाता है, ये 60%, जो भारत का एक्सपोर्ट 90% जितने भी हैंडमेड टेक्सटाइल्स है, आज भी विश्व में 95% से ज़्यादा भारत देश का है। और भारत देश का जो एक्सपोर्ट में जिस तरह का अपना 95% है, उसमें 60% से भी ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का ही प्रोडक्ट्स रहते हैं।
तो इसमें भी जिस तरह से हैंडलूम वर्कर्स का वेलफेयर के विषय में भी अलग सा स्कीम बनाना चाहिए सभापति महोदय। काइंडली कंक्लूड प्लीज। सभापति महोदय, एक तो नाम कुछ आया नहीं आप अभी तक, एसकेएम भी दिखाया नहीं, बीच में मेरे को डिस्टर्ब भी हुआ और अभी आप बता रहे हैं कि कंक्लूड भी कर दें, वैसे भी टाइम बहुत कम मिलता है हमको। वो हमने कहलवाया है, कुछ टेक्निकल थोड़ा सा ब्लिक है, वो रिस्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका नाम आ रहा है क्योंकि स्पीच आप ही की जा रही है, तो इसलिए कंक्लूड करें। Kindly conclude, and I think so only your speech is on the record, so whatever you are going to deliver. So I think there is some technical glitch, they are trying to restart. Okay, sir. So should I restart my speech also? No, not at all. Not at all. Your speech is already on record. So if that is not the case, then I request you, Chairman sir, let me conclude, क्योंकि बीच में 1 मिनट तो लगभग उसी में निकल गया। चलो आप conclude कर लो। तो आपको भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, मेंबर्स को भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। 1 मिनट और कर लीजिए। सभापति महोदय, इस बार के बजट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई स्टेट एंड द हिमालयन रीजन सर, जो इस बार के बजट में पहली बार शायद ट्रैकिंग और हाइकिंग का बात किया गया है। सच में टूरिज्म जो है इसको डाइवर्सिफाई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो हिमालयी राज्य है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ में सिक्किम अरुणाचल में ऑलरेडी से ट्रैकिंग और हाइकिंग बहुत ही पुराने ट्रेडिशन है, जहाँ पे हम आज भी टूरिज्म करते हैं उस तरह से। लेकिन बजट में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को दिया गया, उत्तराखंड को दिया गया, वेस्टर्न घाट को, ईस्टर्न घाट को, ठीक है सबको मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वित्त मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि आई थिंक सिक्किम ही पायनियर स्टेट है जिसने इतना बढ़िया ट्रैकिंग करवाए हैं और आज भी बहुत सारे टूरिज्म में काम करते हैं, और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो ट्रेल्स बनाने की बात है। सभापति महोदय, जस्ट आई विल कंक्लूड थोड़ा सा, इतना ही है। नहीं उतना नहीं सर, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स बनाने की जो बात किया है सर, इसमें मैं बता दूं क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है सर, माउंटेन ट्रेल्स में हम कंक्रीट नहीं बनाया जा सकता है और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ही बनाना चाहिए, ये हम मानते हैं, लेकिन जब उसके लिए बजट रखते हैं तो वन टाइम ट्रेल बनाने से नहीं होगा सर। एक बार ट्रेल बनाने के बाद उसको मेंटेनेंस के लिए भी उसके बजट में प्रावधान होना चाहिए ताकि इसको लॉन्ग टर्म तक लाया जाए। सभापति महोदय, बर्ड वाचिंग, प्लीज सर, लास्ट पॉइंट सर, बर्ड वाचिंग की बात किया गया, बर्ड वाचिंग की बात किया गया। आई एम वेरी हैप्पी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला, इट्स वेरी गुड, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इज बर्डिंग का हॉटस्पॉट है सर, वहाँ मोर देन 600 स्पेसिस मिलता है और सिक्किम में उसमें 800 से ज़्यादा मिलता है, केवल सिक्किम में 600 से ज़्यादा बर्ड स्पेसिस आपको मिलेगा, लेकिन बर्ड वाचिंग जो प्रावधान है उसमें सिक्किम को इंक्लूड नहीं किया गया। और सभापति महोदय, इसके साथ हम इस बजट को समर्थन करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारा बात यही रखना चाहेंगे। थैंक यू। ए लक्ष्मी नारायण जी। కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27పై వరుసగా 9వ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్ట గౌరవనీయ ఆర్థిక మంత్రి వారికి నేను అభినందిస్తున్నాను. గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి దూరదృష్టి గల నాయకత్వంలో ప్రజా సంక్షేమం మరియు ఫలప్రదమైన ప్రజా వ్యయాల మధ్య సమతుల్యతతో ఈ ప్రభుత్వం వికసిత్ భారత్ పునాదులకు నిరంతరం బలపరుస్తోంది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం వ్యయం 5.57% పెరగడం సమగ్ర వృద్ధి మరియు దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి పట్ల ప్రభుత్వ నిబద్ధతను స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తోంది. ఈ బడ్జెట్ జాతీయ ప్రధానకే కాకుండా మాలాంటి ప్రాంతమైనటువంటి ఆకాంక్షను కూడా ప్రతిబింబిస్తోంది. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనంతపురం జిల్లాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాను. తీవ్రమైన వాతావరణ సవాళ్ళను ఎదుర్కొనేటప్పటికీ అపారమైన సహనం మరియు సంకల్పాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న ప్రాంతం ఇది. ఫ్రూట్ బౌల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్గా పేరుగాంచిన అనంతపురంలో వ్యవసాయం ఆర్థిక వ్యవస్థగా కాకుండా మా జీవన విధానం కేంద్ర బిందుగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా నీటి వనరుల పునరుద్ధరణలో అనంతపురం ప్రజలు చేసిన కృషిని గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి గారు గుర్తించినందుకు నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచే లక్ష్యంతో తక్కువ ఉత్పాదన కలిగినటువంటి 100 జిల్లాలను లక్ష్యం చేసుకున్న ప్రధానమంత్రి ధన్ కృషి యోజనలో అనంతపురాన్ని చేర్చడాన్ని నేను హర్షిస్తున్నాను. ఇది పంట ఉత్పాదకత, కోత అనంతర నష్టాలు, పంట వైవిధ్యీకరణ వంటి కీలక సవాళ్లు ఎదుర్కోవడంలో సహాయపడుతుంది. బహుభాష ఏఐ ఆధారిత సలహా వేదిక అయినటువంటి భారత విస్టార్ ప్రారంభం ద్వారా వాతావరణ ప్రమాదాలు మరియు ఉత్తమ వ్యవసాయ పద్ధతులపై రైతులకు తక్షణ మార్గదర్శనం అందించడంలో ఈ ప్రయత్నాలు మరింత బలపడతాయి. సార్, నేటి వ్యవసాయం మార్కెట్లతో అనుసంధానమై ఉండాలి.
ఈ సందర్భంలో యూరోపియన్ యూనియన్తో కుదిరినటువంటి తాజా వాణిజ్య ఒప్పందాలను మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్గా ప్రసిద్ధపడుతున్నటువంటి ఈ ఒప్పందాలకు నేను ప్రశంసిస్తున్నాను. పండ్లు, కూరగాయలు, మసాలాలు, సముద్ర ఉత్పత్తులు, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహార పదార్థాలకు మెరుగైన మార్కెట్ సౌకర్యం కల్పించడం ద్వారా భారత ఆహార ఎగుమతులను పెంచడమే వీటి ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ కొత్త గ్లోబల్ వాణిజ్య నిర్మాణంలో అనంతపురం ఒక ఉద్యానవన ఎగుమతి కేంద్రంగా ఎదిగే అపార సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. దీన్ని సాకారం చేయడానికి జిల్లాలో ఆహార ప్రాసెసింగ్ మౌలిక సదుపాయాలకు మద్దతు ఇవ్వాలని, అలాగే తొందరగా పాడయ్యేటువంటి ఉత్పత్తుల వేగవంతమైన రవాణా కోసం ఉద్యానవనటువంటి ఎయిర్ స్ట్రిప్ను తక్షణమే కార్యాచరణ తీసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. సార్, ఆర్థిక వృద్ధి ఉపాధిగా మారాల్సిందే సార్. రాయదుర్గం, పామిడి వంటి ప్రాంతాలకు జీన్స్ మరియు నైట్వేర్ తయారీలో పేరుగాంచినట్టు ఉండటంతో అనంతపురానికి బలమైన వస్త్ర పరిశ్రమ వారసత్వం ఉంది. అయితే పరిశ్రమల పతనం కారణంగా ఉపాధి నష్టాలు మరియు వలసలు చోటు చేసుకున్నాయి. గుంతకల్నందు 1951 స్థాపించబడి ఒకప్పుడు 1500 మందికి పైగా ఉపాధి కల్పించిన ఆంధ్ర కోఆపరేటివ్ స్పిన్నింగ్ మిల్స్ 1991లో మూతపడ్డాయి. ఆ తర్వాత అనేక ఎంఎస్ఎంఈలు కూడా మూతపడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో మెగా టెక్స్టైల్ పార్కులపై ప్రభుత్వం దృష్టి సముచితమైంది. గుంతకల్ స్పిన్నింగ్ మిల్ పాత స్థలంలో ఒక టెక్స్టైల్ పార్క్ను ఏర్పాటు చేయాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను సార్. ఇది పరిశ్రమలకు పునరుద్ధరణ చేసేటువంటి ఉపాధి కల్పించి స్వర్ణాంధ్ర దృష్టికి ముందుకు చేసుకెళ్తుందని భావిస్తున్నాను సార్. అభివృద్ధిలో సాంస్కృతిక వారసత్వ పరిరక్షణతో కలిసి సాగాలి. 15 పురావస్తు ప్రదేశాల్లో సాంస్కృతిక గమ్యస్థానాలుగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రతిపాదన అభినందనం. ఈ కార్యక్రమంలో గుత్తి కోటను చేర్చాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. 986 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ కోట 1921 నుంచి కేంద్ర పరిరక్షణ స్మారక చిహ్నంగా ఉంది. అపారమైన చారిత్రాత్మక మరియు పర్యాటక సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం ఈ నిర్లక్ష్యానికి గురవుతా ఉంది. లక్ష్యబద్ధమైన పెట్టుబడులు దీనికి ఒక ప్రధాన సాంస్కృతిక మరియు పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చగలని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు గత ప్రభుత్వం హయాంలో సార్ రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ను పర్మిషన్ లేకుండానే మొదలుపెట్టి ప్రాజెక్టును అటకెక్కించిన సార్. పర్మిషన్ కోసం కనీసం ప్రయత్నం కూడా చేయకోకుండా ఉభయ సభల్లో కనీసం మాట్లాడేది కూడా లేదు సార్. ఎందుకంటే ఈరోజు రాయలసీమ పట్ల చిన్న చూపు చూసి ఆ యొక్క రాయలసీమ ప్రాంతంలో కరుగుతున్నటువంటి ప్రాంతంలో ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా, ఎటువంటి అవకాశాలు లేకుండా చేసినటువంటి గత ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్కి జీవనాడేటువంటి పోలవరాన్ని కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పట్టించుకోకుండా పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం వహించి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ప్రధానమంత్రి గారి మోదీ గారి సహకారంతో ఈరోజు పోలవరం పరుగులెత్తించడమే కాదు, మన రాయలసీమకి ప్రాణదాత అయినటువంటి హంద్రీ నివాస్ సుజల సమంతి పథకాన్ని 750 కిలోమీటర్లు పూర్తి స్థాయిలో కట్టించడమే కాదు, నీటిని కూడా ప్రవహింపజేసి ఈరోజు కృష్ణమ్మ తల్లిని కుప్పం వరకు తీసుకొచ్చిన ఘనత నారా చంద్రబాబు గారు తప్పుతుందని చెప్పి సభకు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. దాదాపు గత సంవత్సరంలోనే కేవలం ఒక సంవత్సరంలో 1600 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఆ యొక్క ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు. ఈరోజు మా రాయలసీమలో ప్రధానమైనటువంటి తాగునీరు కావచ్చు, సాగునీరు కావచ్చు, పరిశ్రమల నీరు కావచ్చు, కడప, కర్నూలు, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాలకి మాకందరికీ ముఖ్యమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రాజెక్టు ఈరోజు 40 టీఎంసీల నీటి మాత్రం వస్తూ ఉంది. దయచేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించుకుంటున్నాను, దాన్ని 60 టీఎంసీలకి మీరు పెంచవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను సార్. ఎందుకంటే ఈరోజు రాయలసీమ ప్రాంతంలో అత్యధికమైనటువంటి కరువు సీమగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో నీటి ఆధారితమైనటువంటి పరిశ్రమలు రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు కూడా మీ ద్వారా మేము కోరుకుంటాం సార్. తప్పకుండా వాటిని కూడా మీరు ముందుకు తీసుకొచ్చి మాకు బడ్జెట్ కేటాల్సిందిగా కోరుకుంటాం సార్. అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని యొక్క సమస్యలు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు నెరవేరుస్తూ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ద్వారా రాష్ట్ర పురోగతికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ బడ్జెట్ని నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నాను సార్. ఎందుకంటే మంచి బడ్జెట్ తీసుకొచ్చి మనందరికీ కూడా ఉపయోగపడేటువంటి ఈ పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నారు. అదేవిధంగా తయారీ రంగం కూడా కీలకమైన సార్. ఎలక్ట్రానిక్స్ భాగాల తయారీ పథకం కింద వ్యయాన్ని 22,900 కోట్ల నుంచి 40,000 కోట్లకు పెంచడము ఒక మంచి దిశగా మనం ఒక ధైర్యమైన అడుగుగా నేను భావిస్తున్నాను. రాయలసీమ ప్రాంతంలో శ్రీ సిటీ, హిందూపూర్, కొప్పర్తి వంటి ప్రాంతాల్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీగా ఉన్నటువంటి అపార అవకాశాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిరంతరం ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఈ పథకం దిగుమతులపై ఆధారం తగ్గించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాణ్యమైన ఉపాధి అవకాశం కల్పిస్తుంది సార్. చివరిగా సార్, అనంతపురంలో తయారీ రంగాన్ని బలోపేతం చేయాలంటే లాజిస్టిక్ ఖర్చులు తగ్గించాలి. అందుకే అనంతపురంలో మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్ పార్క్ అభివృద్ధిగా చేయాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను సార్. ఈ బడ్జెట్కి నేను సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తున్నాను సార్. ఎందుకంటే గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీజీ గారి నాయకత్వంలో ఈ ప్రభుత్వ నినాదాల కంటే కూడా పనులు చేసే సంస్కరణలు తీసుకొచ్చే ప్రభుత్వంగా ముందుకు సాగుతుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ కేంద్ర రాష్ట్రం మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారంతో అనంతపురం వంటి జిల్లాల్లో వికసిత్ భారత్ ప్రయాణంలో అర్థవంతమైన పాత్ర పోషిస్తాయని నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. धन्यवाद. श्री चंद्रशेखर जी. धन्यवाद सभापति जी. यूनियन बजट पे आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया. मैं सर्वप्रथम
बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरु और महान पुरुषों को नमन करता हूँ। उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि और मान्यवर महामना रामसु वर्मा जी को नमन करता हूँ और अपने संसदीय क्षेत्र नगीना की जनता का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे चुनकर यहाँ भेजा है। सभापति जी, बजट केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि ये सरकार की सोच, संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब होता है। बजट यह तय करता है कि देश का विकास समावेशी होगा या चुनिंदा और सत्ता में बैठे लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, कुछ लोगों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। विपक्ष के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सत्ता सवाल पूछें और कमियों की ओर ध्यान दिलाएं और देश के उन वर्गों की आवाज बने जो इस सदन में अक्सर आंकड़ों में गुम हो जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, असली सवाल यही से शुरू होता है, क्या ये बजट देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की वास्तविक जरूरतों को समझता है नहीं समझता है। मान्यवर, इस बजट में आर्थिक विकास की बातें अधिक हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की आत्मा कमजोर। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी, आज देश की सबसे बड़ी संकट बेरोजगारी। हर साल लगभग 1 करोड़ युवा रोजगार बाजार में आते हैं, लेकिन अस्थायी और सम्मानजनक नौकरियां और संपादन पैदा नहीं हो रही। इस बजट में स्किलिंग की बात की गई है, लेकिन स्किलिंग के बाद जॉब की गारंटी नहीं है। विशेष रूप से SC, ST और OBC समुदाय के युवाओं के लिए कोई अलग से लक्षित रोजगार योजना नहीं दिखाई देती है। देश की लगभग 45% आबादी जो कृषि पर निर्भर है, जिसमें SC, ST, OBC समुदाय की भागीदारी सबसे अधिक है, लेकिन कृषि और GDP में योगदान 15% से कम किसान की औसत आय और अब भी अस्थिर MSP कोई गारंटी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। सभापति जी, महंगाई का सबसे बड़ा असर गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को पड़ता है। आर्थिक सर्वे के अनुसार शिक्षा व स्वास्थ्य की लागत पिछले 5 वर्षों में 30 से 40% तक बढ़ी है। खाद्य वस्तु कीमतें गरीब परिवारों की थाली को छोटा कर रही है, लेकिन इस बजट में इन वर्गों के लिए कोई सीधी राहत नहीं दिखाई देती। सभापति जी, SC, ST और OBC वर्ग के मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य ये वर्ग है, ये मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन भारत आज भी स्वास्थ्य पर GDP का केवल 2% खर्च करता है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की और अस्पतालों की भारी कमी है। इस बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई निर्णायक वित्तीय छलांग नहीं। सभापति जी, शिक्षा के माध्यम जिससे सामाजिक असमानता टूटती है, लेकिन इस बजट में शिक्षा पर खर्च GDP के लगभग 3% के आसपास और SC, ST, OBC के छात्रों की छात्रवृत्ति में देरी और अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षा गरीब परिवारों की पहुंच से बहुत दूर है। यह स्थिति समान अवसरों की अवधारणा को कमजोर करती है। सभापति जी, SC, ST, OBC के कल्याण के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है, लेकिन राज्यों के हिस्से की धनराशि सीमित है। केंद्र द्वारा योजनाओं का बोझ अधिक संघीय ढांचे को कमजोर, सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम। विपक्ष केवल आलोचना के लिए नहीं। सभापति जी, हम समाधान प्रस्तुत करते हैं। हमारी मांग है SC, ST, OBC के लिए लक्षित रोजगार मिशन चलाया जाए, छात्रवृत्ति को समयबद्ध और कानूनी प्रावधान किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर GDP का न्यूनतम 6% खर्च हो, आरक्षित वर्गों के लिए विशेष उद्यमिता और MSME पैकेज दिया जाए, आदिवासी और पिछड़े जिलों को विशेष सामाजिक आर्थिक विकास योजना चलाई जाए। माननीय सभापति जी, ये बजट आर्थिक विकास की तो बात करता है, लेकिन सामाजिक संतुलन और न्याय की भावना कमजोर दिखाई देती है। विपक्ष के नाते हम कहना चाहते हैं कि हम विरोधी नहीं है, लेकिन अब बहिष्करण और उपेक्षा के विरोधी हैं। जब तक SC, ST, OBC और वंचित और विकास की मुख्य धारा में बराबरी में शामिल हो, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा है। सभापति जी, सरकार 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रही थी, लेकिन आज भी भारत में सफाई कर्मचारी, संविदा कर्मी गटर में उतरता है सर। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, चांद पर पहुंच गए, लेकिन अपने भाइयों की सुरक्षा और तकनीकी मशीनें उनको क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? प्रमोशन में रिजर्वेशन SC, ST, OBC कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, और पुरानी पेंशन सर मिलनी चाहिए, उस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। सभापति जी, बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में देश की अपेक्षा, खत्म करूंगा सर, राष्ट्रपति भाषण पे भी आप देख रहे हैं मौका नहीं मिला, 12 दिन बाद मौका मिला, तो जल्दी खत्म करो, कुछ मांगे तो अन्य राज्यों की तुलना में सर हमारे यहाँ यूपी में ज्यादा है, जिसमें किसान, बुनकर, छोटे उद्योग और आम उपभोक्ता प्रभावित होते हैं। और गैस सिलेंडर सर जब चुनाव आता है तो सब जगह 500 का, और चुनाव के बाद सर 1000 रुपए का, ये मजाक उड़ता है सर गरीबों का। सभापति जी, 1 रुपए लीज पे पूंजीपतियों को जमीन दी जाती है, क्या ऐसी कोई योजना गरीबों के लिए भी आएगी, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए, कि उनको भी जमीन मिल जाए? साथ साथ सरकार दिवाली, धार्मिक तमाम जो धार्मिक आयोजन है सर, उन पर बजट देती है, लेकिन SC, ST, OBC के जो महापुरुष हैं सर, जैसे बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम होता है, रविदास जयंती जी का कार्यक्रम होता है, अम्बेडकर जयंती का, फूले जयंती का, पेरियार जयंती का, बिरसा मुंडा जयंती का, इन तमाम उस पर तो कोई बजट नहीं आता सर। और BT एक्ट सर,
बोध गया सौंपा जाना चाहिए बुद्धों को सर। बहुत दिन से उनका आंदोलन चल रहा है, कल से आंदोलन हो रहा है सर। और अहिल्या भाई होलकर जी की देखिए आप मूर्ति तोड़ दी गई और बाबा साहब का पोस्टर जला रहे हैं सर। मध्य प्रदेश में सरकार ध्यान नहीं दे रही। आप अपनी मांग सर, हाँ मांग रख रहा हूँ सर। ऑलरेडी साथ एक और प्रधानमंत्री आवास योजना का दावा है और उत्तराखंड के नैनीताल में हल्द्वानी में गरीब परिवारों को बेघर करने के लिए मकान तोड़े जा रहे हैं सर। कृपया पंजाब में जो बाढ़ आई थी सर, एक मिनट दीजिए सर, एक मिनट दीजिए। पंजाब में जो बाढ़ आई थी उनके लिए कोई विशेष योजना नहीं है और जातिगत जनगणना में जो सर ओबीसी का कॉलम नहीं जोड़ा सर। मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में हाथ निर्मित पेंटिंग ब्रुश कुटीर उद्योग, यह उद्योग पूरी तरह से हाथ से चलता है। दशकों तक करमुक्त रहा। करीब 50% स्थानीय आबादी आजीविका इसी पे निर्भर है। 18% टैक्स लगा रखा। मेरी मांग है उसको 5% किया जाए सर। 2-3 मांगे सर, इनको उठा दो। काफी मांगे आपने कर दी सर काफी मांगे कर। रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार सर हमारे नगीना लोकसभा क्षेत्र में किया जाए। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों सर, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत बड़ी खराब है। जिला अस्पताल सर, वहां IIT IIM और एयरपोर्ट बने, इसकी मांग हमने पिछली बार भी उठाई थी सर। अंत में लघु उद्योग सर, MSME का कोई प्रोजेक्ट जो ऐसा लगता है जैसे हम विपक्ष के लोग हैं तो हमारे लिए कोई योजना हमारे क्षेत्रों के लिए नहीं होगी सर। सबका साथ, और कौशल विकास सर, युवाओं के लिए आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाए मेरे क्षेत्र में। लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने में है और संसद की गरिमा कमजोर की आवाज उठाने में। मैं सर अंत में कहना चाहता हूं, SC ST OBC पे अन्याय कब रुकेगा? श्री कल्याण बनर्जी सर, हो गई। the union budget of 2026-27 is full of sound and fury. It is faceless, directionless, visionless, missionless and actionless. The budget is anti-pro, anti-youth, anti-women and anti-farmer. The budget is anti-scheduled caste, scheduled tribe and OBC. The economy is derailed. Sir, West Bengal has been deprived of its due fiscal allocation for major centrally sponsored schemes. Funds allocation for Mandrega was completely stopped while allocation for food subsidy. National Health Mission and Samagra Shiksha Abhijan were stopped on irrational ground. This has created extreme hardship for the people of Bengal. Bengalis are being deprived of each and every moment in West Bengal. Normal developmental momentum gets impacted, especially for our state, which is periodically hit by heavy rain, flash flood and cyclones. When funds under Pradhan Mantri Awas Yojana was stopped from Government of India, this state government took up the challenge and started its own Bangla Badi. We have now covered more than 32 lakhs households under this scheme. As on today, total fund due from the Government of India is rupees 1,97,000 crore. Out of these, major shortfalls are Mandrega 43,014 crore, Samagra Shiksha Abhijan 19,045 crore, National Health Mission rupees 4,565 crore. In the Union Budget 2025-26, the Jal Jeevan Mission received a significant enhanced allocation of rupees 67,000 crore as per the budget document. In reality, West Bengal did not receive a single rupee under the Jal Jeevan Mission during 2025-26 so far. Our Chief Minister had repeatedly brought this to the notice of the Honorable Prime Minister and wrote to him several letters drawing his personal attention to the shortfall in fund devolution under several centrally sponsored schemes. However, there was no response and the partial and irrational behavior of the Government of India continued. Our Honorable Chief Minister also wrote to the Honorable Prime Minister several letters regarding the flood problem in West Bengal and the urgent need to adopt a comprehensive approach and funding support. However, we are left alone in this serious battle. Sir, so many letters have been written. This is a bunch of letters I am having, but unfortunately, the Honorable Prime Minister did not feel to give any answer to any of this single letter and did not allocate any single fund, sir. Sir, the Finance Minister in her speech did not mention Bengal even once. The omission is not a mistake. It is a message of ignoring Bengal. Of course, she only knows that they are again going to lose the Bengal with a great number of seats. I mean, they will not reach even the 30 seats. That they know about it. Therefore, Bengal has been ignored. Bengalis have been ignored. Sir, the Dankuni Freight Corridor, which has been mentioned in the budget. Sir, our Chief Minister, Honorable Mamata Banerjee, when she was the Honorable Railway Minister,
envisioned this corridor years ago when she herself presented the railway budget in 2009. That today it is repeated again as if repetition is an achievement. The promise pending for 15 years is not a new announcement in the union budget so far the Dankuni corridor complex is concerned. While the budget has mentioned 3 economic corridors, the West Bengal government has already announced 6 of them. It will connect Dankuni, Bardhaman, Bankura, Durgapur and Purulia. The other will connect Kollani, Bardhaman, Birbhum, Malda, Siliguri and Kuchbihar. The state government has already started working on these projects. We have started, now they are announcing. This is the fun of the things. Now, sir, Bengal has become the hub of various industries, including cement, coal and leather. Even Flipkart and Amazon are also doing business in and around Dankuni within my constituency, Kollani and other places. The finance minister mentioned a kartabbo to fulfill the aspiration of the people by making them strong partners in India's prosperity. But you intend to fulfill the aspiration of selective people while the common people suffer. 10 crore people of Bengal are being branded as Bangladeshi and by the Prime Minister and the Honorable Home Minister. Due to the unplanned SIR, 127 deaths have happened, 1.36 crore cases of logical discrepancies have been recorded, and 32 lakhs unmapped cases in West Bengal. This takes the totally tally to 1.65 crore. Now, since we have moved the Honorable Supreme Court, every day the Supreme Court is interfering with the matter of SIR and giving directions one after another direction so that not a single eligible voter is deleted from the final voter list. This is the stand has been taken by our Honorable Chief Minister. This is the stand has been taken by our General Secretary Abhishek Banerjee. This is the stand of crores and crores Trinamool Congress workers in the state of West Bengal. Sir, the problem with the budget is not only what it allocates or not. The bigger problem is the governance culture. It represents when announcements are plentiful, but implementation is scarce. Sir, for West Bengal in particular, the budget gaps are political fodder. Virtually no direct benefits to the state and notable exclusion. Example given, Bengal's mineral reserves left out of development plans. This has amplified the opposition charge of the centre's bias and neglect towards non-BJP states, reinforcing a narrative of an anti-federal budget. No special financial package or major new projects for West Bengal were announced. Flagship women's schemes like Beti Bachao, Beti Padhao, etc. were largely steady, and there was no special package for women's safety or health aside from continued funding of existing program. Our Chief Minister Mamata Banerjee has condemned the budget as anti-women, arguing that women received nothing substantially new. It is noted that the budget lacked new measures for scheduled caste and tribes welfare beyond the scholarship, calling it against the scheduled caste and scheduled tribe. Sir, the most striking difference in previous years and this year's budget is in the capital expenditure in defense sector, which funds modernization, acquisition and domestic manufacturing. But in terms budget expenditure percent is reduced to 14.67% this year against 16.86% in 2021, and allocation for Department of Space is over 0.26% in 2026 and 27 against 0.48%. Sir, it is everybody's concern. It is everybody's concern regarding the border area. All we are, when this country is facing the border area problem, whether it is a China border, whether it is a Pakistan border, whether it is a Bangladesh border, at that point of time, you are allocating the funds, reducing the budget. Sir, it is not the writer writes a book, that's much. Writer gives it the publication, that's much. And publication, when the publication has come in a public domain, when the publication has come public domain, it is for the reader to, what is this? Hello, sir, kindly allow us to speak. Kindly allow us to speak. What is this? Allow us to speak. Sir, this is the writer. It has become, when it has come to public domain,
public will criticize it. Sir, just to allow me, sir. My time has not been finished. Party time. Kindly allow. I'll make it. Sir, listen to me, sir. Well, it is for the reader to pass their comments, not for anybody to decide. The question is whether it is published or not. The question is whether that manuscript has come into the public domain. The question is not that, whether it has been published or not. The question is whether the contents of that manuscript have been challenged by the Honorable Defense Minister or not. That is the question. Question is not who has published or not. Sir, our country. Sir, सुनिए ना सर, सुनिए. Request is kindly conclude. सुनिए सर, आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है, क्या है सर? जरा टाइम तो दे दीजिए डार्लिंग को. सर दे दीजिए. I'm on chair. I'm on only chair. एक देश को I can't favor you. I can't favor you. I have given you maximum. देश को कंट्रोल कर रहा है 4 आदमी. 2 आदमी देश को जो प्रॉपर्टी है वो बेच देते हैं और 2 आदमी वो खरीद लेते हैं. अरे 4 आदमी गुजरात से आते हैं सर. राहुल गांधी से 4 आदमी से गुजरात से आते हैं सर. Kindly just I will just finish already. Sir, I will just finish. This union budget which has deprived the Bengal, the pupils of the Bengal in the ensuing election give an appropriate answer, and we will find that the BJP is non-existent in the state of West Bengal. Shri Rahul Gandhi ji. Sir, FM is not here, sir. No. Finance Minister is not here for a Finance Minister. Leader of opposition speaking also. You are very senior member. There is a collective responsibility of the government. Already Minister of State Finance is here. Sir, Mr. Pankaj is here. Parliamentary Affairs Minister is here. Railway Minister is here. Sir, this is a budget discussion. Certainly he will come. Sir, certainly he will. नियम जानते हैं. Already Minister of हर Finance समय बात उठाना ही है. बिना मतलब से आप पॉइंट बढ़ाते रहते हैं. You have made your point. You have made your point. Whenever the leader of opposition speaking in the house, that too in a budget discussion, Honorable Finance Minister presents his conventional, sir. Already Finance Minister State is here. Please, Rahul Finance Minister is not here, sir. Please, you take it. Okay, you decide whatever you want. No, I am not. Please don't use his word. He is not deciding on whatever he wants. आप वेणुगोपाल से, you are a senior person. How can you make this statement against the chair? You know that there is a collective responsibility. Just wait. We are all members of the cabinet. MOS is sitting there. Minister will be coming soon. Don't make issue on this thing. This is just a minor thing. We don't know when Rahul Gandhi is coming. First he said he is coming at 12. And there is a discussion going on parallelly in Rajya Sabha. Don't make this an issue. Leader of opposition is going to speak. We came to know later. We were not aware of it. We are here to listen. Thank you for letting me speak today on the budget. Thank you, Rijiju-ji, for your comments. I appreciate them. Some time back, Rijiju-ji asked me, how do I keep fit? You recall that? And I mentioned to him that I do jiu-jitsu, I do martial arts. And lots of people now in India, youngsters do martial arts. MMA is becoming very popular. Judo is there, jiu-jitsu is there, many different types of martial arts. And जो मार्शल आर्ट की जो फाउंडेशन होती है स्पीकर सर, वो ग्रिप से शुरू होती है. जब हम शुरुआत करते हैं, हम अपोनेंट पर ग्रिप लेते हैं, ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं. ग्रिप नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है. ये तो अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन बोले तो नहीं है इसको अच्छी बात कह रहे हैं. हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं. सर थोड़ा सर अरे आप बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए. मैं चेयर पे हूँ. मैंने कहा आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसको राष्ट्रपति सर थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो दे दीजिए. प्लीज. तो शुरुआत ग्रिप से होती है सर. और
लक्ष्य होता है कि ग्रिप के एकदम आने के बाद चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली और फिर एकदम चोक में जाए, चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे हैं थोड़ा, तो सो फोकस बजट पे ही बात हो रही है, आ रहा हूं। तो अरे राष्ट्रपति के भाषण पे नहीं बोले थे, वो बात भी बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। तो पूरा फोकस ग्रिप पे होता है, ग्रिप से लड़ाई शुरू होती है और ग्रिप से हम चौक में जाते हैं। सर, करते हुए जब आदमी के हाथ में चौक आ जाता है, ग्रैपलिंग में जो ओपोनेंट होता है उसकी आंख में दिख जाता है कि बात समझ आ जाती है कि अब मैंने इसको पकड़ लिया है। और होता क्या है सर, वो रेजिस्ट करता है, पहले 2-3 बार ऐसे रेजिस्ट करता है और फिर उसको भी पता लग जाता है कि मैं गया, और फिर वो वहां पे बात खत्म हो जाती है और फिर वो सरेंडर करके ऐसे टैप कर देता है। सर ये सेंटर पीस है सर मार्शल आर्ट्स का, ग्रिप से चोक और चोक से टैप। और ये आप किसी भी एमएमए वाले से पूछ लो, किसी भी जूडो वाले से पूछ लो, काम ग्रिप से शुरू होता है। सर ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर, राजनीति में नहीं दिखती। कहां किसने ग्रिप ले रखी है, चोक कहां लग रहा है, वो दिखता नहीं है सर, छुपा रहता है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सर, I was looking at the economic survey and 2 points I found there, solid points, profound points that I liked. First point, that we are living in a world of intensifying geopolitical conflict. मतलब जो पुराना सिस्टम था, यूएस बेस्ड सिस्टम था, डॉलर बेस्ड सिस्टम था, यूनिपोलर जो सुपर पावर था, उस सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। द डोमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज बीइंग चैलेंज्ड by the Chinese, by the Russians, by other forces. And the second thing, also profound thing, that we are living in a world of energy and finance weaponization. मतलब एनर्जी को और फाइनेंस को हथियार बना दिया गया है। Main thing they are saying here is that we are moving from a world of stability to a world of instability. Prime Minister stated and NSA stated, shockingly, some time back, that the era of war is over. In fact, we are moving into the era of war. And you can see, war is there in Ukraine, war was there in Gaza, war is there in the Middle East, threat of war is there in Iran. We had Operation Sindoor. So we are moving into a world of instability. The dollar is being challenged. The central game, as my friends on the other side understand, is the dollar is being challenged. US supremacy is being challenged. We are moving from a world of one superpower to some new world that really we can't predict. Maybe 2 superpowers, maybe multiple powers. And it's an unstable world. And that is what you have said in your economic survey, and I agree with it, 100%. At the center of this fight is the concept of AI. Everybody says that we are moving into the era of AI. And I'd like to warn the government that AI is going to have many
consequences. One consequence of AI is going to be that something that we relied on, the Congress party and the UPA built, the entire Indian IT industry, companies like Infosys, companies that are at the forefront of information technology are going to struggle. They're going to be challenged. The idea of becoming a software engineer, which is a very popular idea in India, going to be challenged. Lots of our software engineers are going to be replaced by AI. So why I'm saying this is we're moving into a turbulent world, dangerous world. Now, when you move into a dangerous world, what is the first thing that you have to understand? The first thing you have to understand is what are your strengths as a person and as a nation. So I'd like to say to the House here what I think are the strengths of our great country. And I would say that the central strength is our people. 1.4 billion people, brilliant, energetic, dynamic, who can challenge anybody in the world. Biggest strength. But it's not only the people. Because in the 21st century, very interesting thing has happened. People create data. So we have the biggest data pool on the planet. 1.4 billion people means massive amount of data is being generated in India, and data is wealth. Everybody talks about AI. But talking about AI is like talking about the internal combustion engine without talking about petrol. The petrol for AI is data. So let me repeat that. The petrol for AI is data. Meaning if you have AI and you don't have data, you have nothing. If you have AI and you don't have data, you have nothing. Now, which are the two biggest pools of data on the planet? The Indian pool of data and the Chinese pool of data. They also have 1.4 billion people. We have bigger population than them. We allow more freedom. We allow our people to do more dynamic things. So we have, in fact, more interesting data. What's the second strength? The second strength, and what do you need in difficult times? You need food. Who produces our food? Our kisans produce our food. Our laborers produce our food. This is what gives us strength. This is what allows that data to be produced. This is what allows that brilliance to be generated. And we fought for food security. Food is abundant today. So that's the second thing. And the third thing, what do you need to run a modern country? You need energy, you need fuel, you need petrol. So these are the three things that need to be protected in turbulent times. Our people and our data, our food supply, the ability to produce food, and our energy system. Now, what's interesting to me is that the budget recognizes these things. The budget recognizes that we are going into a dangerous time, intensifying geopolitical conflict. The budget recognizes that energy and finance are being weaponized all across the world. Dollar is being weaponized, dollar is weakening in value, gold, silver prices are going up. Everybody can see this. But there is nothing in the budget. There's absolutely nothing in the budget that looks into these two issues. There is nothing in the budget about energy and finance weaponization. There is nothing in the budget about the intensifying geopolitical conflicts and what we are going to do about it. The budget just reads like any of their budgets.
right? And budget is something, of course, that comes once a year. But in parallel to the budget, something new has happened. The US deal. We have made a deal with the United States. Now, one thing I'd like to make very clear, and this is something that is not well understood. In a contest between the United States and China, the single most valuable asset is Indian data. If the Americans want to remain a superpower, please understand what I'm saying. It is very profound what I'm saying. If the Americans want to remain a superpower, and if the Americans want to protect their dollar, the key to that is Indian data. Why? Because the Chinese have a data pool of 1.4 billion people. And you can take European data, you can take African data, you can take American data, add it all up. It does not compete with Chinese data. So the real fight that is taking place, I'm saying what is our strength? I'm saying if India is going to go to the table, then what do we put on the table? What do we say? Listen, this is what we put on the table. And what we put on the table, it's beautiful. What we put on the table is our people. Their wisdom, what they do, their likes, dislikes, their imagination, their fear. This suddenly in the 21st century has got value. In the 20th century, it had no value. I remember so many people saying that population is a weight, population is a disaster. No, population is the biggest asset you can have. It's a strength. But it's only a strength if you recognize that data is important. Now, what is surprising to me? What happened in the deal? If the India alliance was negotiating with President Trump, I will tell you what we would say. The first thing we would say is, President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. But please remember that if you want to protect your dollar, the biggest asset that can protect your dollar is lying with the Indian people. First thing. Second thing we would say, President Trump, if you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. Second thing we would say is, Mr. Trump, please understand that our energy security is our energy security. And no matter what happens, we are going to protect our energy security. And the third thing we would say is, President Trump, we understand that you have a voter base, agricultural voter base. We understand that you need to protect your farmers, but we will also protect our farmers. But the main thing I'm saying is that an India alliance government would go there and say, data is our biggest strength. Now let us talk.
Meaning we would go there as equals. We would not be made equal to Pakistan. And if President Trump decided that Pakistan army chief is going to have breakfast with him, then we would have something to say about that. Now, what has happened? You've done a trade deal. It's small. It's written small in the back. Now, let me tell you what is written about data. Our most valuable asset. The thing that is going to transform India in the 21st century. The thing that is going to make us a superpower in the 21st century. This is what the Modi government has done with our data. Number one, we give up control over our digital trade rules. Number two, there is no need for data localization. Number three, free data flow to the United States. Number four, limit on digital tax. Number five, no need to disclose any source code. The finance minister is smiling. She likes to smile. She likes to smile a lot. 20-year free tax holiday to anybody who wants it, to the big tax companies. This is what you've done on data. Second, no, I'll come to that, brother. Second, what have you done on tariffs? At the beginning, %3 was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. A 6% increase. 6x increase. Sorry, thank you. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports, and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. Now, I understand that the people across the aisle here want to protect our country. I understand the people across the aisle here value our data. I believe they do. I also believe that the Prime Minister understands that India's biggest asset is its people, and as a result, its data. I know that. I do not believe for 1 second that the Prime Minister does not understand this. Next,